Assalamualaikum students. We have already discussed about the Le Chatelier's principle in the previous lecture about the change in pressure and change in concentration. Today we will discuss the third factor which will affect the chemical equilibrium. This is change in temperature. जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में तो वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट विल फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन so that it will absorb the added heat, and decrease in temperature will favor the exothermic reaction. ठीक है, this is opposite to that. Endothermic reaction is the reaction in which the heat is absorbed, and exothermic reaction is that reaction in which the heat is released. So whenever the reaction is given in this case, for example A plus B gives us C plus D, the enthalpy of reaction is given in the plus sign, plus 20.5. It means that overall this reaction is endothermic. It is endothermic in the forward direction and it is exothermic in the backward direction because there are two reactions taking place, forward and reverse. So the overall reaction is endothermic, so the forward reaction is endo and the backward reaction is exo. Whenever we increase the temperature, it will favor the endothermic reaction. It means that when we increase the temperature of this reaction, it will proceed in the forward direction. It will favor the endothermic reaction and the reactants are converted into products. The more products will be formed and the concentration of reactant decreases. This is the case when we increase the temperature, endothermic reaction favored, more products are formed and the reactant decreases. When the product increases, the value of Kc also increases. So when we increase the temperature, equilibrium shift towards the right and the value of Kc also increases. When we decrease the temperature, it will favor the exothermic reaction, which is proceeding in the backward direction. It proceeds toward the left. And when it proceeds toward the left, the products are converted into reactants. Reactants ज़्यादा हो जाएंगे और product की concentration decrease होना शुरू हो जाएगी. So the product decreases and the reactant increases. When the product decreases, the value of Kc also decreases because the Kc depends on the concentration of product. So whenever the product decreases, the Kc also decreases. So in this case, the Kc decreases. So यहाँ आप देख रहे हैं कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ Kc भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है. ठीक है, इट मीन्स के जो Kc है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अच्छा, हम लोगों ने पहले जो रिएक्शन लिया था उसमें हमने एंथैल्पी जो थी वो प्लस में ली हुई थी, यानी हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन लिया था. एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है हमने वो डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट मीन्स कि एंथैल्पी ऑफ हीट अगर माइनस में दी हुई है तो इट मीन्स कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो है और बैकवर्ड में एंडो है. ठीक है, अब फॉरवर्ड में एक्सो है, बैकवर्ड में एंडो है. जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड होगा, यानी कि जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट प्रोसीड करेगा. ठीक है, और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे होंगे रिएक्टेंट्स में. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी. सो वैल्यू ऑफ Kc भी डिक्रीज होगी. ठीक है, एंड व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड. इट मीन्स द रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड राइट. ठीक है, एंड द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस and the concentration of reactant decreases. When the product concentration increases, the value of Kc also increases. So ये आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट था कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को भी अफेक्ट करता है और ये Kc की वैल्यू को भी अफेक्ट करता है. This is all about the Le Chatelier principle, and the last non-factor is also have to discuss in the Le Chatelier principle, which is catalyst. Catalyst has no effect on the equilibrium reaction because when we add the catalyst into this reaction, it will speed up the forward reaction as well as the backward reaction. So when we add the catalyst, the equilibrium is not shifted in any direction. It means that it doesn't affect the equilibrium position and it also not affect the value of Kc. So it is a non-factor. So there are three factors that affect the Le Chatelier principle. One is concentration, second is pressure, and the third one is temperature. Hope you understand the lecture.